Saf much and back again with a new video guys. So welcome back to my channel. So तुम लोग सब देख सकते हो मेरा नया video it's now finally out. So I'm just gonna build a PC by myself. So let me show you the components. So I got ASRock P450 Steel Legend. It's a motherboard. Then I got Corsair fan cooler. It's RGB you're gonna see. And I got then it's a RAM Corsair DDR4 8 2x8 GB 16 GB 3200 MHz RAM. Then I got ATI 8 GB graphic card. Then got ADM Ryzen 5 3400G. We got the main thing, Thermaltake power supply. It's 700 volt and it's like 5 years warranty. Then I got WD HSD. It's like 256 GB and the main thing, the CPU case Corsair 275 ATX. So you're gonna see the video very soon. Okay, so finally तुम लोग ने intro तो देख लिया होगा, but अभी ये सब चीज़ assemble करने के लिए I wanna call my friend जो I think so maybe you all guys know if you have watched my previous first video. So उसके लिए तुम लोग को रुकना पड़ेगा, मैं उसको पहले बुला लेता हूँ. AJ Cam Vlogs. Let me put it in a language you can understand. So guys, आज हम आ चुके हैं हमारे भाई सैफ की चैनल पे. तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम बहुत समय साथ में व्लॉग बना रहे, तो इसने बीच में मेरे से बात की थी कि मेरे को एक अपना खुद का एक पीसी बनाना है जिसमें मैं गेमिंग कर सकूँ, एडिटिंग कर सकूँ, और अभी जो जिस हिसाब से फैशन चल रहा है आरजी वगैरह का, तो मेरे को इस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी और थोड़ी बहुत जो मैंने इंटरनेट से गेन की, तो मैंने इसको गाइड किया. तो उस हिसाब से इसने ये सब पार्ट्स दिए एक एक. तो चलो स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके इसको हम लोग पार्ट्स डालना स्टार्ट करते हैं. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो जस्ट तो भाई 12 बज गए. Finally done. the most awaited part. निकाल. Okay, finally guys. So 1 2 3. मसला हो गया.
thank you so much for watching my video. So I hope you all guys do like the video. So please do like, share, comment and subscribe to my channel, and please do not forget to press the bell icon. So yep, see you in the new video with some new content. So I hope you all guys like the video. So stay tuned for the new video guys. हमारा क्रॉसर का 275 का ADI का ये है। बीच बीच में से तू जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है।